जनानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धेनामवित्रवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जय नारायणि नमोस्तुते जय नारायणि नमोस्तुते। अथ सप्तमोऽध्यायः चण्डमुण्डासुरवधः। ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः। अहं पूर्वमित्येवं युद्धलालसाः ग्रहीतुकामास्तां देवीं शूलपट्टसधारिणः। ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने। ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः। आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः। ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तान् अरीन् प्रति। कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा। भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतं। काळीकराळवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा दीपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसादिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रत्ननयना नादापूरितदिङ्मुखा। सा वेगेनाभिपतिता खादयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तत्बलम्। पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहियोधखण्डा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षुपवारणान्। तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यधिभैरवम्। एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादान्याक्रम्य चैवान्यमुरसा अन्यमथोपथयत्। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः। मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां। ममर्दा भक्षयच्चन्यांश्च ताडयत्तथा। असिना निहताः केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिः हतास्तथा। क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं। दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां काळीमतिभीषणम्। शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः चादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः। तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्। बभूर्यथर्कबिम्बानि सुबहूनि खनोदरं। ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी। काळीकराळवक्त्रान्तर्दुर्दशं दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमथावता। गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनद। अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपादयद्भूमौ। सा खड्गा
खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डश्च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयादुरम् शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासं मिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिर्वाच तवानीदौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच काళीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः यस्माच्चण्डश्च मुण्डश्च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चण्डमुण्डासुरवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि च अतिरिक्तानि क्षमस्व सा ईश्वरा। अपराधसहस्राणि क्रियं देहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व सा ईश्वरा। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष सा ईश्वरा रक्ष रक्ष सा ईश्वरा। हरिः ओं तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सदाशिवायेति समर्पयामि जगदम्बिकायेति समर्पयामि 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 सर्वं समर्पयामि।